Hello everyone. So this is our first class of Antim 730 current affairs. In this video lecture, we'll be covering current affairs for 2 years. है ना? In the recent times, UPSC has started asking questions based on T2, that is 2 साल के current affairs के cycle से पूछ रहे हैं, तो वो हम करेंगे. Right? We have covered this. ये जो current affairs है वो हम लोगों ने मिलके बनाया है. I'll tell you something about us. हम लोग experienced mentors हैं and all of us have written mains. We have qualified. We are going to read these current affairs under the guidance of selected candidates and mentors who have gotten 120 plus scores, right? तो personally speaking, जो मेरे scores हैं वो 130 plus रहे हैं, right? कैसे आते थे? देखिए, मैं बहुत holistically पढ़ता था current affairs को, जैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है? Combination of newspapers, magazines, government websites like PIB etc. will be covered. ठीक है, हमें बहुत बल्कि और ईयरली कंपाइलेशन नहीं पढ़ने हैं. इफ वी हैव जस्ट वन गुड सोर्स वी आर गुड टू गो. ठीक है, सो दिस कैन बी डन. अच्छा, वी ऑल्सो हैव PYQs अटैच्ड विद द आंसर्स, विद द क्वेश्चंस. तो पता चलेगा हमें कि हाउ द UPSC इज आस्किंग क्वेश्चंस. दिस विल ऑल्सो इग्नाइट आवर ब्रेन, राइट? Ignite our brain to create questions and to handle them in the paper efficiently. ठीक है? Without wasting much time, let's come. देखिए, तो क्या क्या themes हैं? Reports, terminology, one-liners, concept and news, all these things. So these are not our own creation, but they are directly picked from the recent pattern of PYQs, previous year question paper, starting from 2022 going all the way to 2013. ठीक है, 2013 was the year primarily when UPSC started questions on analytical themes. ठीक है, तो let's start. देखिए, रिपोर्ट और इंडाइसेस पढ़ने का एक तरीका बता देते हैं. आपको सिर्फ रिपोर्ट का नाम पढ़ना है, जैसे काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर पे है. ठीक है, इसने क्या किया है, इसने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स निकाला है, राइट, टू मैप रीजन्स ऑन एक्सट्रीम क्लाइमेट. इसके अंदर के पैरामीटर्स पढ़ना इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. फिर है NAAQs. व्हाट इज दिस? दिस इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. इसके जितने हैं ये पैरामीटर्स, ये आप ज़रूर देखें. ये क्यों देखें, थोड़ा ट्रिकी रहेगा, बट इस पर एक डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है. इसको हम करेंगे सॉल्व. तो कैसे होगा, देखिए, इस क्वेश्चन में एयर क्वालिटी पे पूछा गया था कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, व्हाट आर दी, राइट? तो डीप इकोलॉजिज्म क्या है? इट बिलीव्स दैट ह्यूमन शुड रेडिकली चेंज द रिलेशनशिप विद नेचर. ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर नेचर जो है, अगर ह्यूमंस हैव टू सस्टेन देयर एग्जिस्टेंस, right, they should live responsibly with the nature and large scale changes are required. ठीक है, इसके अलावा एक होता है shallow ecologism, right? shallow ecologism कुछ नहीं होगा, इसके just opposite है, that is we do not need such large scale measures. ठीक है, climate equity क्या होता है? Nothing, it's just that the burdens and benefits of climate protection efforts need to be shared in an equity based manner. ठीक है, फॉर इंस्टेंस जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको आप they should be provided with climate financing. ठीक है, राइट. व्हाट इज कार्बन बजट? कुछ नहीं होता है. This is also a very simple concept. Carbon budget is the maximum amount of cumulative net global anthropogenic carbon dioxide emission. ठीक है, that would result in limiting global warming to a given level with a given likelihood. तो इसमें the budget is nothing but anthropogenic carbon dioxide emission. ठीक है, let's come to this carbon markets. वो क्या होते हैं? देखिए, they are such marketplaces where carbon credits can be bought and sold. Now, what is a carbon credit? It is a permit where 1 ton, देखिए 1 ton है. UPSC can play funny here and it can say 1000
समथिंग, ठीक है। 1 टन याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नॉट एनी अदर गैस, इट्स ओनली 1 टन of 1 ton कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट सल्फर डाइऑक्साइड, नॉट मीथेन, ठीक है। रिमूव्ड, रिड्यूस्ड और सेक्वेस्टर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अभी तक सबको समझ में आ रहा होगा, इट्स वेरी सिंपल। व्हाट इज ग्रीन स्टील? देखिए ग्रीन इज समथिंग in general parlance also, it is nothing but something that is energy efficient, something that is produced without use of certain harmful I would say source. So fossil, देखिए green steel में क्या होता है, manufacturing of steel without use of fossil fuels, simple बात है, ठीक है। low carbon energy source like hydrogen, coal gasification of electricity instead of traditional carbon intensive manufacturing route of coal fired plants, coking process होता है ना। Similarly, this question came in 2019 का pre Denisovan कुछ नहीं होता, they are human species that thrived along with Neanderthal man. ये भी एक सब स्पीसी थी, है ना, which were not humans but they looked like us. तो एक आया था तो we have put it right in the news, although chances of it coming again is very low. What is a climate emergency? देखिए, it is nothing but emergency must be some catastrophic event. So there is no precise definition, but 2019 यूके में डिक्लेयर कर दिया गया है, रिसेंटली वनुआटो। इसकी देखिए हमने लोकेशन भी दिया है, यू हैव टू गो एंड लुक एट इट, ठीक है। इन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, तो दे विल बी टेकिंग सम ड्रास्टिक स्टेप्स, ठीक है। व्हाट इज ज़ॉम्बी आइस? देखिए ज़ॉम्बी आइस आ सकता है क्वेश्चन, स्टिल अटैच टू थिकर एरियाज ऑफ आइस बट इज नो लॉन्गर गेटिंग फेड बाय लार्जर ग्लेशियर्स, ठीक है। तो बेसिकली डिस्कनेक्ट हो गया है, आइस है, कनेक्टेड है, बट इट इज नॉट बीइंग फेड बाय अ थिकर एरिया ऑफ आइस, ठीक है। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम कुछ नहीं होता है, इट इज बेसिकली अ स्पेसिमेन कंसिस्टिंग ऑफ ड्राइड प्लांट पार्ट्स। कुछ नहीं होता है हर्बेरियम में, देयर आर वेरियस प्लांट्स, उनके लीफ चिपका देते हैं टू डॉक्यूमेंट देम। और ऐसे बहुत सारे बॉटनी में खास तौर से people who have a botany optional or who had some forestry related knowledge, they would be knowing. It is nothing but a collection of dried plant species for their systematic study, ठीक है। what is one water approach? देखिए one environment approach होती है जिसमें humans are not considered separate from environment, plant and wildlife etc, ठीक है। तो one water approach में क्या होगी, integrated approach to planning of water, अर्बन वाटर सप्लाईज को करेंगे, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, स्टॉर्म वाटर, सबको हम रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अ वेरी जेनेरिक टर्म। एक बार डेफिनेशन देखिए, दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, यूपीएससी विल कीप आस्किंग दीज, हमें नहीं खत्म करना है अपने चांसेस इनको गलत करके, ठीक है। टिपिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए ये टिपिंग पॉइंट है, यहाँ तक सब सही चल रहा है, ठीक है। अगर हमने इसको क्रॉस करा तो कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स होने लग जाएंगे। Level of ecological changes if crossed could spark a significant changes in the way Earth system operates, affecting ocean, weather, chemical processes, etc. ये 6 हैं, 6 of them. Question आ सकता है, less likely but may be asked, which of the following are tipping points on the Earth? Green Iceland sheet, West Antarctic ice sheet, ocean circulation collapse, coral reefs, ठीक है। बेरेंट्स सी पता करिए कहाँ है, नॉर्दर्न रीजन्स, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एक बार PYQ भी देख लेते हैं। ब्लू कार्बन, इट्स इन द नेम, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। कॉमन कार्बिंग मैट्रिक सिस्टम बाय UNEP, सिंपल है, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा पेक्यूलियर है। इन सच क्वेश्चंस there are higher chances of you being wrong, so don't attempt such questions if you are very sure, ठीक है। थोड़ा बहुत हम दिमाग लगा सकते हैं। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस को हम कैप्चर करेंगे, रिड्यूस करेंगे हमारा एमिशन और सेक्वेस्टर करेंगे, ठीक है। जैसे हम अंडरग्राउंड एरियाज में डाल देंगे या फिर इन ओशंस वी कैन सेक्वेस्टर, राइट। ओशंस में कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी सेक्वेस्टर्ड, राइट। वन टर्म इज कार्बन फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, what is this? So this is the homework number 2. You guys have to find out and let me know in the group. I'll be checking with you. ठीक है? So this way a sense of accountability develops between us. All right. What is triple planetary crisis? Nothing. It's a term that may be asked. Climate change, pollution, biodiversity loss. PCB से याद कर लीजिए. P for pollution, C for climate change, B for biodiversity loss. ठीक है. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन देता है? देखिए, it is given by FEE, Foundation for Environmental Education. It's an NGO, right? इंडियन बीचेस को रिसेंटली मिला है. ठीक है, मिनिकॉय, थुंडी बीच एंड कार्डमट बीच लक्षद्वीप में है. And there are 12 such beaches who have gotten the blue flag certification. You may not remember all the 12 ones. It's fine. इस साल क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड आइदर इन मेंस और इन प्रीलिम्स. लाइफ मूवमेंट पे हमारे ऑनरेबल पीएम ने COP27 में बोला है that we need to reinforce environmentally friendly behaviors. ठीक है, that is nothing but involving people in planetary conservation. ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे हम, एनर्जी इंटेंसिटी कम करेंगे, कार्बन एमिशंस को कम करेंगे, we will increase the energy efficiency, all these things. Another thing is phytoplasma. What is it? Bacterial parasites of plant tissues transmitted by insect vectors. Vectors are the carriers involved in plant-to-plant transmission, and they transmit through seeds of infected trees. Sandalwood spike tree कर्नाटका में मिला था, इससे ये न्यूज़ में आया है. ठीक है. E100 project is nothing but related to ethanol production. 100 something is a target. E for ethanol. ठीक है. Homework number 3. You have to tell me what is the current ethanol blending target and biodiesel वाला target. ठीक है. Hint है, कुछ 20 आता है और कुछ 5 आता है. Right? You have to tell me. ठीक है. तो अब आते हैं हम वन वेरी सिंपल थिंग, वन लाइनर्स पे. ठीक है, वन लाइनर्स की उतनी यूटिलिटी है जितना इसमें दिया है, इसके बियॉन्ड मत जाइए. यू डू नॉट हैव टू गो बियॉन्ड दिस लेवल, क्योंकि क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक दीज. व्हाट इज ग्रीन इंडिया मिशन? Incorporating environmental benefits and cost into union and state budgets, thereby implementing the green accounting. थोड़ा भी आइडिया होगा आपको तो you would know that Green India Mission is about afforestation works and rejuvenation of the degraded forest lands, right? तो वन तो हो नहीं सकता है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस नहीं है. Another homework you have to tell me which is the first state in our country which has gone for green and green GDP जैसे होता है वैसा उन्होंने कराया, green environment product. आंसर एक हिंट दे देता हूँ, गंगा जो रिवर है यहीं से इसी स्टेट से निकलती है, राइट? ओके. लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन to enhance agricultural output so as to ensure food security to one and all in the future. Again, this is not true. ठीक है. Answer is 3. Forest cover, and see all the 3 options are starkly different from each other. So answer is definitely 3. Greenhouse gas protocol है, it's in the name. Environmental tool है government business को. ठीक है. Right, so you should know this. Similarly, again and again the question is getting asked, climate action tracker क्या है? Database created by coalition of research organizations. बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते हैं? ठीक है, इसका कोई वैलिड रिस्पॉन्स नहीं है. यू हैव टू मेक अ कॉल बेस्ड ऑन असेसमेंट एंड ओवरऑल रिस्क टेकिंग. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग you have to mark every answer, but just knowing certain PYQs definitely helps. ठीक है. NCAP ने क्या करा है? What is NCAP? National Clean Air Program by 2026. ठीक है. अर्लियर गोल था 2024 तक का, उसको अपडेट कर दिया गया है. ठीक है. 30% रिडक्शन, 20% से 30% रिडक्शन को अपडेट कर दिया गया है. और 20 to 30% जो टारगेट था उसको 40% रिडक्शन में अपग्रेड कर दिया गया है. ठीक है. तो पहले था टारगेट ऑफ 20 से 30% रिडक्शन 2024 तक, अब है 40% रिडक्शन 2026 तक.
ठीक है. It covers 132 cities, includes 128 cities based on NAAQs. We have already discussed this. And 15th Finance Commission identified 8 million plus cities. ठीक है. Cyclone Asani is just the name of the cyclone, emerged in Indian Ocean, name given by Sri Lanka. You don't need to find what Asani means. Similarly, Cyclone Kareem, active over Bay of Bengal, emerged in Indian Ocean, fine. कालबेलिया ट्राइब कहाँ होगा? राजस्थान. बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वॉज इंक्लूडेड यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. और ये कालबेलिया नृत्य करते हैं, डांस, दे परफॉर्म डांस. What is Podu cultivation? It is the shifting cultivation practiced in forests of Andhra Pradesh and all these regions. ठीक है? Just the name. And similarly, this Jhum cultivation in Northeast India, Bewa system in Madhya Pradesh, Kumari in Western Ghats, Vatra in Rajasthani. ठीक? So these are just one-liners. It may not make sense to there is no logical connection between the different things अभी जो हमने पढ़ी हैं, but still पता होना चाहिए. M stripes, something in the name itself, stripes for the tiger. So it's just an Android app basically in which we monitor the movement of tigers, nothing else. ठीक है. जियो टैगिंग कर सकते हैं आप. कैटरैट क्या है? कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल फॉर ऑटोमेटेड सेग्रीगेशन ऑफ कैमरा ट्रैप फोटोग्राफ्स. देखिए कैमरा ट्रैप्स क्या करते हैं? देयर आर सर्टेन से 2 trees. ठीक है. And these are, suppose a tiger is supposed to pass through it, तो यहाँ एक कैमरा लगा देंगे, यहाँ एक कैमरा लगा देंगे. These are camera traps. Similarly, if somebody comes and poaches the tigers, यहाँ trap में आ सकता है. So all these things get recorded. ठीक है. Next, Bansera is Delhi's first bamboo theme park. Nothing to note here. It's just a simple theme and knowledge. ठीक है. Don't remember it. Cherrapunji of South is Agumbe village in Karnataka. यहाँ कोबराज भी मिलते हैं, सो कोबरा कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है. कुद्रेमुख नेशनल पार्क में मिलता है. क्या राउंड है ये? ठीक है. व्हाट इज प्यूरोस? इट इज एंटी पोल्यूशन हेलमेट दैट कैन हेल्प 2-wheeler राइडर्स ब्रीथ क्लीन एयर. सी, इट्स अ वेरी ट्रिवियल फैक्ट ऑफ नॉलेज, पीस ऑफ नॉलेज. ठीक है. बट थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए. मे नॉट बी आस्क्ड. This table is single-handed most important piece. ठीक है. देखिए अभी NDCs, that is nationally determined contributions, हमने फिर से अपडेट कर दिए हैं. राइट. पहले 33 to 35% टारगेट था, ये 21st कॉप में था. अभी हमने 45% फ्रॉम 2005 के लेवल से कम कर दिया है. ठीक है. नॉन फॉसिल फ्यूल्स 40% था पहले, नाउ 50%. पहले कार्बन सिंक वॉज 2.5 to 3 billion tons. ये इतना ही रहेगा. दिस इज द प्रोग्रेस. 24% रिडक्शन हैज बीन अचीव्ड एंड 41% ऑफ द टोटल फॉसिल फ्यूल नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन हो रहा है. राइट. ओके. इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम डेवलप्ड बाय बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. नथिंग टू नोट हियर. MON माउन साइक्लोन. ठीक है. फाइन. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नैन मडोल हिन्ना मनोर टाइफून्स हैं. फाइन. हिंदू कुश माउंटेन्स में कौन कौन से, व्हाट आर द डिफरेंट माउंटेन रेंज दैट कम इन हिंदू कुश माउंटेन्स? ठीक है. हिमालय स्पैनिंग अक्रॉस अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंट्री इन टर्मोइल अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान. Again, homework. You have to map all these things, all these countries on a atlas. Probably you can draw them to remember it. Green Fins Hub क्या है? It's the first global marine tourism industry platform set up by UNEP and Refold Foundation. Right? Let's complete this, then we'll come to the PYQs. World Green City Awards given to Hyderabad by International Association of Horticulture Producers. Not important. Paddy pellet scheme क्या है? Pellets क्या होते हैं? Small pile create कर देते हैं from paddy. That can basically have, this can be burnt and calorific value can be used. Waste to wealth वाला approach which our PM Modi has always stood for.
Hatti community is in Himachal Pradesh. It is demanding ST status. It can come as a match the following type question. Cyclone Sitrang, probably you can remember it. Park Road Tiger Safari is starting in, or it's related to Corbett National Park. कहाँ है या बताइए. Biochar is again made by heating stubble in the absence of oxygen. It is used as fertilizers. RUCO, FSSAI, it's the short form for repurpose used cooking oil. So it's an initiative by FSSAI to divert used cooking oil from food value chain to biodiesel manufacturers. You have to tell me under which ministry does FSSAI comes. ठीक है? It's a homework. I'm giving you certain hint. Both the letters of H, W will be used in that ministry's name. We have Shakti policy. Shakti policy is used for long-term coal linkage, and PM Gati Shakti is used for different things, right? Bharat TAP initiative. This can be asked this year. Ministry of Housing and Urban Affairs under Amrut and Swachh Bharat Mission to provide low-flow sanitary ware at scale and thereby reduce water consumption at source considerably. Let's come to the PYQs. ये पूछ रहा है leaf litter decomposes faster than any other biome. As a result of the soil surface is often almost bare. इतनी जल्दी decompose होता है that it turns bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant form that reach up to the canopy vicariously. By climbing the trees, whatever, epiphytes gives away the answer, that is tropical rainforest. Epiphytes climbs on the main tree. These are epiphytes and they reach for better sunlight. ठीक है? If rainforests are lungs of the earth, wetlands kidneys. Kidneys क्या करती हैं? They purify the waste material. So absorb heavy metals and access nutrients. इसमें कोई सी एक condition match नहीं होगी. In other options, okay? Let's come to next topic. In conventions and organizations में what kind of questions can be asked? Again, बहुत ज़्यादा deep में नहीं जाता UPSC. You just have to know the declaration's name, something peculiar they may ask, ठीक है? Or they may ask you to have a kind of match the column type approach. Like this convention is related to which body, right? Or options can be given, like option number 1, 2, 3. ठीक है? We'll see. First, let's solve this PYQ. What it says is, which of the following statement best describes the polar code? So polar means, just remember this. ठीक है? I know it was not possible for each one of us to remember this, but it is the international code of safety for ships operating in polar waters. ठीक है? Either you know it or you don't know it. अगर इसको हम solve करेंगे तो हम apply कर सकते हैं brain, ठीक है? But it's again a difficult task to do so. So my advice is not to take a lot of chances, and as long as we are making safe guesses, it's fine. Now let's talk about the bond challenge. Sorry, the UNCCD. It's a legally binding treaty under UN for restoration and rejuvenation of land fertility. अभी इसका 15th session हुआ था, COP15. तो they have set a target of 1 billion hectares by 2030, number 1. Then we have Abidjan Declaration. Forgive me if I'm mispronouncing it wrong. Gender equality, business commitments from business communities. Then we have Sahel sourcing challenge. ठीक है? Great Green Wall is being constructed in Sahelian region in Africa. This is the Sahelian region. ठीक है? Then we have Droughtland. New UNCCD Public Awareness Campaign was launched. Let's come to the Bond Challenge. So Bond Challenge has set to restore the 150 million hectare by 2020 and 350 million hectares by 2030 for degraded and deforested landscapes. ठीक है? This is a challenge. It is not part of UNCCD, but it's an older theme.
Next we have Stockholm plus 50. So what is this? 50 years have passed since the Stockholm conference. When was it? You have to find out. 1972 it was. Plus 50 theme, so healthy planet for prosperity for all. Stockholm plus 50 agenda is there for COVID-19 and to protect the planet. What is Seoul? Seoul is a city in South Korea. It's its capital city. तो वहाँ डिक्लेरेशन हुआ है बाय वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस फॉर हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट एंड ह्यूमंस. ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड. Then we have Living Himalaya Networks Initiative. What is it? Established as one of WWF's global initiative to bring about transformational conservation impact across eastern Himalayan countries of Bhutan, India and Nepal. Only these three countries, adapting to climate change, connecting to habitat and saving iconic species. This can be asked this year, right? Then we have Ramsar Convention. So we all know this is for wetland conservation. Chilka Lake was the first designated Ramsar site in India. We also have Montreux's record related with Ramsar. In this we have two sites, Kevladev in Rajasthan and Loktak in Manipur. Kevladev and Loktak, right? Only two sites in Montreux. You have to find out what is the difference in Montreux and Ramsar. ठीक है, it is part of the same Ramsar site, but इसमें Montreux में critical wetlands को जोड़ा जाता है. Chilka was part of Montreux record, but then it was removed. ठीक है. Then we have the Lisbon Declaration by Second United Nations Ocean Conference to conserve or protect at least 30% of the global ocean within marine protected areas. India has committed to a coastal clean seas campaign and will work toward a ban on single-use plastics. UNESCO has also launched its key State of the Ocean report. ठीक है. Antarctic Treaty 12 original members हैं. इसमें India is not a member. जो 60 degree south latitude के covers the area of 54 parties. Okay. Then we have Convention for the Conservation of Antarctic Seals, Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. This has been ratified by India. And Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty. ये सारी convention इसका part है, Antarctic Treaty का. I mistakenly said something else. देखिए 12 original members में India was not a part. ठीक है, इतना याद रखिएगा बस. ठीक है, ये PYQ यहाँ solved है. Just go through all the options and remember these. देखिए ये जो आंसर हमने मार्क करके दिया है इसको आप एक बार प्लीज गो थ्रू इट. ठीक है, इट वाज रियली टफ वन. इवन आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व इट. फाइन. सो आई डू नॉट expect each and every one of you to solve each and every answer. ठीक है. This PYQ on New York Declaration of Forest was there. Very recently it was asked, I think in 2021 or 2022. देखिए third option gives it away that it cannot be legally binding because it's a merely declaration, right? So it cannot be this. So answer can be either A or D. ठीक है. Answer here is 1, 2 and 4. Right. Then we have the Mission Integrated Biorefineries, joint initiative of India and Netherlands with the inclusion of Brazil and Canada as core members and the UK and the European Commission as supporting members. What does it aim to do? To replace 10% of the fossil fuel based chemicals and materials with bio based alternatives by the end of the decade. So I think it can be asked. Then we have Global Clean Energy Action Forum, right? So Global Clean Energy Action Forum is joint convening of 13th Climate Clean Energy Ministerial, 7th Mission Innovation Ministerial, MI, that is
Mission Innovation is a global initiative of 22 countries including India and the European Commission. ठीक है? Let's come to ICI-MOD, International Center for Integrated Mountain Development. ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं है. Only 8 regional members, countries of Hindu Kush Himalayas. These are the countries mentioned. India is a part of it. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. 9th session was hosted by India, also known as Seed Treaty. Is a major international agreement to conserve, use, manage plant genetic resources for food agriculture. It is a legally binding treaty. Homework for you. Where has India set up its seed bank in our country? ठीक है? Global Alliance for Industry Decarbonization by International Renewable Energy Agency IRENA, formed under Bali Declaration, aims to accelerate net zero ambitions and decarbonization of industrial value chains in pursuit of Paris Agreement climate goals. Right? Then we have Stockholm Convention. This is important one. By UNEP aims to eliminate, restrict POPs. What are these? Persistent organic pollutants, which enter the fatty cells of the body and they cause injury, long-term injury. Dirty dozens, these are called. So answer can be, question can be framed like, what do you mean by dirty dozens? So it refers to 12 persistent organic pollutants like aldrin, chlordane, DDT, hexachlorobenzene. This name was asked in the paper once in 2013-2014 UPSC prelims. Montreal Protocol you must all be familiar with. Kyoto adjustment made to the Montreal Protocol aims to avoid 1 degree Celsius rise of future warming, right? So it's an adjustment to the Montreal Protocol. You have to find out where is Montreal. I think it's in India. Correct me. Some of you would find out that it's in Canada, right? ठीक है, it's in Canada. I was just joking. Then Montreal के बाद आता है Kyoto adjustment, global important agriculture heritage system. This we have already discussed in the class. ठीक है, ये नाम दिए हुए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए. इस पे क्वेश्चन आया है, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, व्हाट इज इट? इट्स एन NGO and nothing more. ठीक है, for overall conservation. Salim Ali ji, great ornithologist, was associated with this BNHS. ठीक है, partner of BirdLife International. Important international principles of water sharing are Harman Doctrine, Campion Rules, Helsinki Rules. So this can be asked. The following rules are associated with what? For water sharing. Acha, India has an issue with one of our favorite neighboring country, Pakistan. इस एरिया में हेलसिंकी रूल्स का कुछ चल रहा था इशू 2 साल पहले, राइट? यू हैव टू फाइंड आउट इस क्रीक का नाम क्या है. What is it? Is it Kori Creek? Fine. What is First Movers Coalition? By US and World Economic Forum at COP26 in Glasgow. Where is Glasgow? ठीक है, it's in Scotland. Joined by India. Global initiative harnessing the purchasing power of companies to decarbonize 7 hard to abate industrial sectors: aluminium, aviation, chemicals, concrete, shipping, steel, trucking sector. All these. ठीक है.